pteridophytes are creeping plants. These are creeping. As they have weak stems. As they have weak stems. They are not thalloid. They have roots. They've got a stem and they have leaves as well. Now, because they creep on the ground, they need to protect themselves. The stem here, it should remain protected. Scales cover the surface of stems. Mostly they are creepers. Now, as they are creeping plants, because they are creeping plants, because of this habit, because of this habit, hence they are known as the reptiles of the plant kingdom. इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? Reptiles of the plant kingdom. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है. The algae are aquatic, है ना? Algae are aquatic. ठीक है, हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी पढ़े हैं, but most algae are aquatic. And the pteridophytes are the first properly developed terrestrial plants. Pteridophytes, first land plants. Now, why they are first land plants? Because these are the first to have vascular tissues. Xylem phloem होता है इसमें, जिसकी वजह से सॉइल में से वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं efficiently. Hence they can absorb water from the soil efficiently, right? Now algae are aquatic and these are the first land plants. इसे अगर हम वर्टिब्रेट से कंपेयर करें तो एल्गी को हम बोल देते हैं फिशेस. Algae are the fishes of plant kingdom. Simply because they are aquatic. And pteridophytes के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं reptiles. इनके बीच में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, they are the bryophytes. इसलिए हम bryophytes को क्या बोल देते हैं? Because see, animals में जो evolutionary sequence है, the fishes evolved into amphibians, the amphibians further evolved into reptiles. अगर हम evolutionary sequence की बात करें, evolution of vertebrates की अगर हम बात करते हैं, the fishes evolved into amphibians. The amphibians evolved into reptiles, and the reptiles they diverged to form the birds, apes, the birds, and these have also evolved into mammals. Mammals have evolved from the reptiles. Now,
ये सीक्वेंस है, ये एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। इसको अगर हम पैरेलल यहाँ लेकर चले तो फिशेस को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी एल्गी को क्या बोल देते हैं, तो फिशेस। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स बोल देते हैं। इनके बीच में जो आ जाएगा उसे आप क्या बोलोगे, एम्फीबियंस। Hence, the bryophytes are called the amphibians of the plant kingdom. There is no proper reason to define bryophytes as amphibians. There is a reason for the pteridophytes to be called as reptiles. The first reason is the creeping stems, the weak stems, which run along the surface of the ground. जमीन के साथ साथ जैसे सांप सांप होता है, स्नेक्स होते हैं, उस तरह से रहता है। दूसरी चीज, the body is covered with scales. Body is covered with scales. Scales are found in fishes. There are very few amphibians which have scales, but then reptiles have scales. A scaly skin, a dry scaly skin is a feature of reptiles. की skin कैसी होती है? Dry scaly skin. Right? There is a logical reason for the pteridophytes to be called as reptiles. There is a kind of logic behind the algae being called as fishes. The intermediates are hence known as amphibians. Amphibians का मतलब होता है having a stage or an aquatic stage and a terrestrial stage and a terrestrial stage in life cycle, in the life cycle। जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें अगर आपको दो तरह की स्टेजेस नजर आती है तब आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हो, एम्फीबियन। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा द एम्फीबियंस कैन सर्वाइव इन लैंड एज वेल एज वाटर, कैन सर्वाइव इन बोथ कंडीशंस, लैंड एज वेल एज वाटर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग पानी के अंदर कुछ टाइम तक अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, बट देन if it is active or if it has to lead an active life, जब उसको खाना पीना ये सब कुछ करना होता है, it has to feed itself, if it has to mate, right, then has to come, especially for feeding, it has to come onto the surface of the land, उसको आना पड़ेगा। It has got lungs. Tadpole, which is a larva of frog, has got gills, वो पानी के अंदर रह सकता है, lives totally inside the water। But as far as adult frog is concerned, the adult frog has to come onto the surface of the water, surface of the land. It is terrestrial। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। अभी देखो ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ नहीं होता। Bryophytes, as we have learned, bryophytes are definitely shade loving and moisture loving plants, right? But इनमें दो स्टेजेस ऐसी नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते जिन्हें वाटर चाहिए और जिन्हें एक दूसरी स्टेज जो कि टेरेस्ट्रियल है, टिपिकल टेरेस्ट्रियल है, दैट डजंट हैपन, राइट? ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये बायो ओलंपियाड का क्वेश्चन भी है। द क्रीपिंग प्लांट्स in which the stems are covered by scales are known as pteridophytes. Now the pteridophytes, because they have vascular tissues, they can survive on land as well. So, next please. Pteridophytes are found, or you can say they occur in habitats
ranging from aquatic conditions to severe dry conditions. बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस तक भी ये मिलते हैं. I'm not saying they could be desert plants, right? But they can survive in very dry conditions. ये जो aquatic हैं, aquatic plants हैं, SAM, SAM, Salvia, ना, Salvinia, Azolla, and Marsilia. Severe dry conditions. The best example is Selaginella. Selaginella एक species होती है, Selaginella bryopteris. Now this plant is known as संजीवनी. इसे कॉमनली क्या बोला जाता है? संजीवनी. देखिए संजीवनी प्लांट्स दो तरह के हैं. एक तो जो हनुमान जी लिखे आए थे, दोनों ही अपने सिलेबस में. एक है एलोवेरा, द सुप्रीम हीलर. बॉडी में अंदर कोई गड़बड़ हो, बॉडी के सरफेस पर कोई गड़बड़ हो, सुप्रीम हीलर. इट इज यूज्ड both for external as well as internal ailments. स्किन पे अगर कोई रैशेस हो गए या कुछ भी है, कोई वुंड है, कट आ गया है, एनीथिंग एट ऑल. एलोवेरा का जूस भी लोग कंज्यूम करते होते हैं. एलोवेरा की सब्जी भी बनती है, इसे ग्वारपाठा बोलते हैं. इट्स वेरी कॉमन इन ड्राई कंडीशंस. इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. Then there is this Selaginella bryopteris. This Selaginella bryopteris is basically sanjeevani for itself. ये दूसरों के लिए संजीवनी है. It helps to help in healing. And Selaginella doesn't dry easily. Hence, there is another word for this plant, resurrection plant. इसे हम resurrection plant भी बोलते हैं. Sir, so can you explain this part again, like Selaginella one? Can you explain it again? क्या चीज समझाया उसमें बताइए. संजीवनी का मतलब है, संजीवनी का मतलब है द सपोर्टर ऑफ लाइफ. संजीवनी का जो संस्कृत का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है सपोर्टर ऑफ लाइफ. ठीक है. Now, the aloe vera plant, it supports life or supports the biological forms, right? The other biological forms. ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मदद करता है. आप इसको स्किन पे लगा लीजिए, आप इसको खा लीजिए, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं. इट्स अ मेडिसिनल प्लांट. एलोवेरा इज अ मेडिसिनल प्लांट. And this Selaginella, it's sanjeevani for its own self. It doesn't die easily. There's a word resurrection plant for this. Now, resurrection का मतलब होता है coming back to life again. Resurrection means coming back from the dead. Coming back from dead. Coming back from the dead. That's quite the word we have heard. Coming back to the life, like from coming back from death. That is resurrection. ठीक है. अच्छा जी.
ये होता क्या है, ये जैसे ये संजीवनी, ये सिलेजनेला है, द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, बहुत ज्यादा जब सूखा पड़ता है, तब दिस कंप्लीट मास इट टर्न्स इनटू अ बॉल ऑफ हे, झाड़ होती है सूखी, बिल्कुल सूखा हो जाता है, और इस तरह से ये कैसी बॉल सी बन जाती है, एंड दिस इज कैरिड विद विंड्स, दिस हे बॉल is carried. It seems as if it is dead. It is carried by wind. It would reach areas of water, reaches favorable conditions, and again comes back to life. And again it forms a plant. दोबारा से नया प्लांट बन जाता है। ये जमीन से बिल्कुल अलग हो गया, कोई रूट वूट के साथ कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा, बिल्कुल जैसे सूखी घास का एक गोला सा हो जाए, इस तरह का बन जाता है। इतना हल्का हो जाएगा कि हवा इसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाएगी। Hence the word resection plant. So the pteridophytes would be aquatic. They can occur in severe dry conditions as well. Arid conditions, आप कह सकते हो. Moisture is very low. Aquatic के examples SAM, SAM. Dry conditions का best example, dry conditions में रहने वाले plant का best example Selaginella. ठीक है? Now the Selaginella, sorry, the pteridophytes are of three types. Only these are of three types. तीन categories में मैंने divide करते हैं. The ferns, horsetails, and club mosses, and club mosses. The moss like habit है, लेकिन इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है which appears as if it's a club. Right? तो अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पेज. Sir, can you just show the last page for 1 second? पूछने वाले थे सर, नोट करके नहीं करते. Thank you, sir. Thank you, sir. हो गया, चलिए. The groups. अपनी NCERT में there are 4 groups which are mentioned. Lycopsida. These are basically orders. Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida, which are the main groups. These are the main groups. Just hold on.
There is another group known as Psilopsida. 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 Pteridophytes जो हैं, they are very primitive organisms. Pteridophytes are very primitive organisms. And these organisms, most of this group, Psilopsida, they have become extinct. Most are extinct. Right. Now this plant, example, इसके दो example आप पढ़ते हो. सामने लिखो. राइनिया, RHYNIA, ये +2 की एनसीईआरटी में भी दे रखा है. राइनिया, it's a fossil, it's extinct. It is extinct. The living member, only living member of this member is Xylophyton. PSILO. Xylophyton. This is the only living member. बाकी जो ये ग्रुप्स हैं, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, बाकी जो ये ग्रुप्स हैं, इनके मेंबर्स आज भी होते हैं. ठीक है. This includes club mosses. Club mosses. The best example जो अभी हमने पढ़ा, that is Selaginella. Selaginella belongs to Lycopsida group. बाकी तो उसकी एक है जिसका नाम भी ऐसा ही है, Lycopodium. Lycopodium is medicinal plant. Then this Sphenopsida. Sphenopsida includes other group, horsetails. Example, Equisetum. EQUI का मतलब ही हॉर्स होता है. Equisetum. Right? Then the Pteridopsida. The members of the Pteridopsida are known as ferns. And this, the ferns. Adiantum, example. Adiantum. Adiantum एक स्पीशीज है, एडियंटम कॉडिटम, CAUDATUM. एडियंटम को अलग अलग नामों से जाना जाता है. इट इज नोन बाय सेवरल डिफरेंट नेम्स. दिस स्पीशीज इज नोन एज वॉकिंग फर्न. दिस इज नोन एज द वॉकिंग फर्न. स्पीशीज का नाम ध्यान रखना, एडियंटम कॉडिटम इज द वॉकिंग फर्न. राइट. The aquatic ferns, the aquatic pteridophytes are ferns. Aquatic pteridophytes are ferns. This is the largest group. Aquatic pteridophytes are ferns. Aquatic pteridophytes के हमने नाम पढ़े, SAM. Right? Then Teris. It's very different. Another example of this is and Teris. PTERIS. Okay. This group is the largest group. The largest. Achha. The differentiating points. How do we differentiate the pteridophytes into these groups?
differentiating points. ये साइलोप्सीडा को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ये बाद में अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आर एक्चुअली size of the leaves, size of leaves, माइक्रोफिलस, मैक्रोफिलस दो तरह के लीव्स होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे छोटे लीव्स, माइक्रोफिलस मींस a plant having small leaves, and मेगा और मैक्रो, मैक्रो और मेगाफिलस। एक तो लीव्स में डिफरेंस होता है, देन प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कोन्स, एब्सेंस ऑफ कोन्स और स्ट्रोबेलाई, STROBILI, strobili. Strobili are actually clusters of the aggregates of these leaves. Right? And the third, which is the most important criteria of differentiation, is type of spores formed. Types of spores formed. इसके बेसिस पर हम प्लांट्स को, इन प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, ठीक है। तो चार ग्रुप्स हो गए, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा एंड साइलोप्सीडा, चार ग्रुप्स। एक्सक्यूज मी सर, Okay. सर आपने ये इस फिनोस्पीडा के एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? Horse tails. नहीं सर, इसके आगे ये Equisetum. EQUI. Equi means horse, and seta is an extension. ओके सर। एक्सटेंशन, ठीक है। तो हॉर्स टेल बन जाता है इक्विसीटम, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। अब नीट में क्वेश्चन आया था, which one of the following are heterosporous, which one of the following are heterosporous, और उसमें अलग 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 नाम दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे अगर आप देखो तो नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए। साइलोप्सिड्स, स्फिनोप्सिड्स and the lycopsids, all of these are homospores. ये एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं यार, होमोस्पोरस। तो अब अपने पास एक ही बचा, एंड दैट इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा इज हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। इसको याद करने के लिए हम एक लाइन बोलते हैं, is, 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 sam, SAM, heterosporous। ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेटेरोस्पोरस, तो ये लाइन याद रखिएगा। ये आईएस क्या चीज है? आईएस इज आइसिटीज, टेरिडोफाइट है आइसिटीज, ISOETES, आइसिटीज। ये सैम तो वो हो गए एक्वेटिक प्रॉन्स, राइट, ठीक है।
इस सेम हेट्रोस्पोरस के लिए जैसे आइसिटीज और ये सैम। स्पिनोप्सिडा में इस ग्रुप में जिसमें हॉर्स टेल था, इसका जो इक्विसिटम है वो भी हेट्रोस्पोरस होता है। इस सेम हेट्रोस्पोरस ऑल्सो इक्विसिटम। ऑल्सो इक्विसिटम। ये सारे के सारे हेट्रोस्पोरस है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे लीव्स को लेकर बातचीत चल रही थी, माइक्रोफिल्डस एंड मैक्रोफिल्डस। ठीक है, on the basis of leaves, on the basis of leaves, so ग्रुप्स में याद करेंगे। ग्रुप्स में याद करने से वैसे रिमेम्बरेंस अच्छी रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, ये तो हमने जो याद किया अभी तक, दिस इज फॉर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ स्पोर्स डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, लाइकोप्सिड्स ग्रुप, माइक्रोफिल्डस, माइक्रोफिल्डस plants having small leaves. Lycopsids, Lycopsida, right? Or next, Macrophilus, the ferns. Ferns have large leaves. इसमें ferns, Pteridophyta. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप पुरानी स्लाइड्स दिखा सकते हो ताकि मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूं। पुरानी स्लाइड तो कुछ है ही नहीं। क्या? ये वाली स्लाइड कहाँ से हाँ, डिस्कनेक्ट हुए थे तुम? इससे पहले यही हुआ था, वहीं से हुआ था। हाँ जी, कहाँ से हुए थे? यस।